Great morning, students. Hope you are fine at your home. Today, we are going to learn about the chapter acid, base, and salt. In previous video, we have discussed about acid, base, and salt. So today, we are going to discuss about some more properties of them. So as you know very well, in this topic, we are going to discuss about strong acid. A strong acid is an acid that is completely ionized in the water. So this means that all the acid molecules become ions in the water. देखिए, जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, then it will be divided into the free ions, and because of these ions, this will conduct the electricity through it. Now, for example, you can take strong examples is sulfuric acid, hydrochloric acid, and nitric acid. All these are the examples of the strong acid. Once they are divided, they will not be joined again. So that is why they are called as the strong acid. एक बार जब उनका डिवीज़न हो जाता है, फर्दर वो आपके दोबारा से कंबाइन नहीं होते. दैट इज़ वाई हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखते हैं. Now what is the weak acid? A weak acid is an acid that is only partially ionized in water. This means that only a few molecules of acid becomes ions in water. After some times, in the weak acid, the ions will be again joined to form the new compound. सो यदि हम वीक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एक बार तो वो डिवाइड हो जाता है आयंस में, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आयंस आपके वापस से कंबाइन हो जाते हैं. सो दिस इज वाई दे विल कॉल द वीक एसिड. सो वीक एसिड फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वीक एसिड. सो जब हम वीक एसिड की बात करते हैं तो उनकी जो पीएच वैल्यू होती है, इट इज़ मोर देन द 4 and 5. एज वी नो वेरी वेल, वी मेजर द वैल्यू ऑफ पीएच ऑन द पीएच पेपर. as much as less the value on the pH paper, as much as the strong of any acid will be there. As we understand that a strong acid always provide hydrogen ions very easily, or it will make the hydronium ion very easily. Now bases. A base is an oxide or hydroxide of a metal. For example, bases are sodium oxide, sodium hydroxide, copper oxide or copper hydroxide, etc. A base react only with an acid to form a salt and water. This process is called as neutralization because this form the neutral substances. Salt and water both are the neutral substances. That's why this process is called as neutralization. So in this process you have observed already that the neutralization process helpful in the many life processes. Just like the acidity of the soil can be neutralized with the help of the basic salt addition, because it will form the salt and water with the soil and it will neutralize to it. So that is why this process will be called as the neutralization process. So here we have done the neutralization process, that's the addition of the acid with the base to form the salt and water together. So this is called as neutralization. Now acid, base and salt. Alkalis. If a base is soluble in water, it is called as alkali. देखिए बेटा, जो बेस आपका वाटर में सोल्यूबल होता है उसको हम अल्कली कहते हैं. An alkali is soluble base which produce hydroxide ion in water. Means हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो जब भी हम उसको वाटर में ऐड करेंगे. Sodium hydroxide is an alkali because it dissolved in water to produce hydroxide ion. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके सारे अल्कलीज होते हैं वो सारे बेसिस होते हैं, बट सारे बेसिस आपके अल्कलीज नहीं हो सकते क्योंकि सारे बेस आपके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करते.
कुछ ही ऐसे बेस होते हैं जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन को देते हैं, इसीलिए हम उनको एल्कलीज की कंडीशन में नहीं रख सकते। नाउ what are the chemical properties of the alkalis? Alkalis have a bitter taste, soapy feel, मीन्स चिकना होता है, और bitter मीन्स कड़वा होता है। Alkalis turns red litmus into blue, ठीक है, alkalis रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। Alkalis react with acid to form the salt and water, ठीक है, अल्कलीज जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तब वो आपका सोल्ट एंड वाटर को फॉर्म करते हैं, एंड दे विल परफॉर्म द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद देम आल्सो। सो दिस इज़ द हेल्पफुल थिंग्स हेयर वी कैन अंडरस्टैंड दैट जितने भी अल्कलीज होते हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड आयन एट देयर लेवल सो दैट दे कैन बी फॉर्म द बेसिक salt in the water, and this would be helpful property for making them alkalis. Now we are going to chemical properties of the alkalis. Alkalis react with ammonium salt to produce ammonia gas. जब भी alkalis आपके अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करेंगे तब वो अमोनिया गैस को बनाते हैं। अमोनिया गैस इज एसिडिक, thus it turns red litmus into blue, ठीक है, जो अमोनिया गैस होती है वो आपकी एसिडिक होती है, इसीलिए वो आपके क्या कर देती है, इट विल मेक ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड लिटमस पेपर। अमोनिया गैस इज़ वेरी सॉल्यूबल इन वाटर, दस गिव्स ए पंजेंट स्मेल टू द स्मेल, ठीक है, इसीलिए क्या होती है, अमोनिया गैस आपकी बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल परफ्यूम करती है। नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर, the universal indicator consists of a mixture of the dyes which changes its color, pH from the solution and approximate pH of the solution. So the universal indicator or pH paper changes its color according to the pH of the solution. So we can understand it. जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेसिक सोल्ट है हमारा। So we are using them to test the solution of the given base. Either it's a acid, base or a salt. So now we can understand there are the three types of the oxides. One is the acidic oxide that is formed with the non-metal. Second is basic oxide which is formed by the metal. And third is the neutral oxide or amphoteric oxide which is formed by the either of acid and both to neutralize them each other. This video we have learned different type of acid, base and alkalis. Hope you will understand them and you will read the chapter according to your needs. Thank you and have a nice day.